Hello, hi, good evening, everyone. This is Sukanya, and I am back again with a new topic for this particular week. So, this week we are covering your session for geography, right? And good evening, all of you guys. Let me see who all are here. Do write your comments and do write hello, good evening in the chat box, so I know that the people who were there last week also are present this week as well. Okay, so again guys, this week what are we planning to do is we are planning to cover two set of topics. So we've got Mayur. Hi, good evening, Mayur. I remember you were there in the last session and you did come up at the top 10. Okay, what about others who all are there from the last session? Do I see other people coming in? Do write. Okay, we've got Sri Lakshmi here. Hi, good evening. Ajay, you're here. Good evening. So some new people also. That's good. Right. Okay. So guys, like I was talking, that this particular week we'll be covering दो set of topics. ठीक है, एक हम theme choose कर रहे हैं geography की, and we'll be covering questions from geography. First day we'll be doing all the world related questions. Hi, good evening, Harji. Again, I think a new member that I saw. ठीक है. So first day we'll be doing physical geography of the world, and then we'll be doing India related. So 2 days we'll be spending on India related questions and 1 day on world related geography questions. And again guys, here you have to notice that we'll be doing a lot of mapping questions, and I think geography is very interesting in the ways that you can answer quickly. It's like if you've done your maps very correctly, it's very interesting. And then we'll be moving towards your social justice, governance and society related questions the last 2 days of the week, where we'll be talking about some schemes related to your poverty, inclusive growth, and finally some questions on your statutory and constitutional bodies. ठीक है, so ये हमारा पूरा template रहेगा. This will be the template for this particular week, and we'll be following these set of questions. ठीक है, चलो let us quickly move to the questions and let us start with this particular round. ठीक है, so guys, what all everybody who's new, again for their knowledge, all you got to do is go to menti.com and आपने टाइप क्या करना है, कोड वहाँ पे 514349. ठीक है, you can see the code written above also. ठीक है, so you have to just go in and log in and type this particular code, and you will be able to participate in this particular quiz live. ठीक है, and usually what I've seen up till now, people are very competitive, so if you miss few initial questions, you'll not be able to catch up. ठीक है, so all of you guys quickly go to menti.com, and the code that you have to use is 514349. ठीक है, hi, CR is saying 1 minute ma'am. Yes, sure CR, we're waiting for one minute more here so that everybody can join in. Go ahead guys, quickly join, because like I said, once initial momentum is lost, you're not able to cope up the maximum mark score, and today it's geography, so there's a high chance that I think a lot of you will be able to answer these questions. ठीक है, so shall we start guys? Batao, shall we start? Let me know in the comment box. Hi Varsha, hi, good evening. So I've got a couple of new people here today. Sri Lakshmi, Varsha, Harji. Chalo, फिर start करते guys. Let's quickly move on to some geography related questions. It's going to be fun. I think first questions है, first question of the day, and you have to again be careful, pick incorrectly matched. Don't pick up the correct match. ठीक है, तो mountains, there are various types of mountains. ठीक है, so you have to pick up which mountain is incorrectly matched here. ठीक है, so number 1 is related to block mountains, number 2 is fold mountains, number 3 is volcanic mountains,
and number 4 is residual mountains. So Abhishek is saying yes ma'am, such a positive energy that you exude. Thank you so much Abhishek. Chalo quickly go in, join and quiz में answer करो, ठीक है. अच्छा block, okay cool. So I see that all of you have voted, but there's a problem here that the voting pattern shows here that a lot of you guys have gone wrong. See again guys, you have to remember कि बेसिक टाइप्स जैसे वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से हैं या यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, इन सब के एग्जाम्पल्स करना स्पेशली फ्रॉम द फिजिकल जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इवन इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो अब अगर हम यहाँ पे स्कोर्स देखें, I think many of you have gone wrong. Hi, good evening, Sujita. I think one day in history you had topped. I had seen the results. Congratulations on that, Sujita. ठीक है. अब देखो जिसने यंग फोल्ड माउंटेन्स के लिए हिमालय किया है, प्लीज़ गाइज दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है. ये तो बिल्कुल भी नहीं सही है बिकॉज यू नो यंग फोल्ड माउंटेन्स आर द बेसिक माउंटेन्स. दे आर द यंगेस्ट mountains that have been formed because of the stress, like two plates come and they collide and they form kind of a shape of the mountains. तो इसमें रॉकीज आते हैं, हिमालयाज आते हैं, एंडीज आते हैं, एल्प्स आते हैं, ठीक है. डोंट गो रॉन्ग ऑन दिस, ठीक है. मैनी ऑफ यू हैड मेंशन्ड ब्लॉक माउंटेन्स. अब देखो ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, जहाँ पे भी क्रस्ट में देखो बेंडिंग या फोल्डिंग होती है, ठीक है. आपका फॉल्ट एंड क्रैक्स होता है तो आपका काइंड ऑफ एक ब्लॉक ऊपर बन जाता है एंड द अदर पोर्शन इट सबसाइड्स, ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक माउंटेन्स फ्रॉम द वर्ल्ड, द वेरी कॉमन आर राइनलैंड माउंटेन्स, ठीक है. ये जर्मनी में है. अगेन ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ राइनलैंड एरिया इज फेमस फॉर दैट. एंड वॉयजेस, ये जो थर्ड ऑप्शन है ना वॉल्केनिक, दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है. तो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, डोंट गेट देम रॉन्ग, ठीक है. वॉल्केनिक के कॉमन एग्जाम्पल्स आई थिंक माउंट फीजी है जापान में, वीव गॉट कोटोपेक्सी इक्वेडोर, ठीक है. वीव गॉट माउंट मेयॉन फिलीपींस, ठीक है. सो ये जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, मेक श्योर यू रिवाइज देम प्रॉपरली, ठीक है. And then residual, now Monad Knox USA में जो mountains है, I'm not sure अगर आपने उसकी images देखी है, ऐसे small pieces of not small, big pieces but isolated pieces of mountains you can see, ठीक है. तो ये वाला is also something that I think once you look at the picture ना, you'll remember that you've seen such mountains. These are basically residual mountains जो completely denudation से अब प्रेजेंटली दे आर इन दैट स्टेज. उनके ऊपर काफ़ी सारे एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन हुए हैं, बी इट वाटर, रिवर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड द रिमेन्स इज कॉल्ड व्हाट, रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है. तो वी हैव अ वेरी स्लो स्टार्ट. देखो ज्योग्राफी इज ईजी, लाइक आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को ब्लॉक, फोल्ड, वॉल्केनिक, रेजिडुअल पता होगा, बट वील बी चेकिंग यू अपॉन दी स्पेसिफिक डिटेल्स कि आप ये प्रॉपर माइन्यूट डिटेल्स अपने पेपर में पढ़ते हो या नहीं, ठीक है. बिकॉज दैट इज वॉट अल्टीमेटली UPSC checks you upon, ठीक है. तो अब देखते हैं 3 लोगों का सही था. हुआ दोस्त 3 people. ओके सुजीता, नाइस एंट्री. सौरभ गुड. निकी इज देयर, वेरी वेल. Other than that, I can see Akash, I can see Ajay, I can see Sachin, Sneha. I'm not sure who is Magical Rhino. We can see Vijay Lakshmi and Peter Parker. So I think yeah, a couple of new entries. Not sure अभी तक कि who is who. Let me know who is Peter Parker and let me know who is Magical Rhino. ठीक है, चलो. So guys, slow momentum, but चलो start करते हैं. अगला क्वेश्चन लेते हैं. अगेन द सेम आइडिया, whoever is joining now, आपको क्या करना है, ऊपर जाके menti.com पे कोड टाइप करना है 51 43 49. See, what I have done is topics are easy. Like ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी नहीं होगी इन क्वेश्चंस में, but I have made sure that the options are a bit difficult or a bit detailed, ठीक है, so that when you're revising it hits you that okay, I missed this particular detail, ठीक है. So ये वाला एक level I have kept in these questions, ठीक है. चलो let's quickly move on to the next question. What is the next question? It's on Rhine River. So we're covering a lot of geography of Europe today,
ठीक है. So you have to tell me which all countries does Rhine flow through. ठीक है. It's Switzerland, Liechtenstein. I'm not sure about the pronunciation, but you can read it through. So it's Principality of Liechtenstein. Then there's Belgium, there's Germany, France, and Netherlands. ठीक है. Now be very careful when you vote. Look at the countries properly. ठीक है. I think I've made the elimination a bit difficult. So basically Rhine rivers actually flows through some 6 countries and it goes and ends up in the North Sea at Rotterdam. ठीक है. तो the idea is कि you have to identify this 6 countries and okay, I had majority vote here going wrong on one option. So I think I did made the paper a bit tricky, but I think that you guys deserve that kind of challenge for you. ठीक है. अभी भी 6 लोगों ने ही सही आंसर दिया है, 11 लोगों ने गलत दिया है, 8 लोगों ने और ऑप्शन सी को चूज़ किया है एंड एक ने 4th को. सो गाइज इफ़ यू गो एंड लुक एट द मैप ऑफ राइन रिवर ना, आप देखना कि इट डज गोज थ्रू स्विट्ज़रलैंड. ठीक है. एक जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम इज़ द ओनली कंट्री इट डज़ नॉट गो थ्रू, क्योंकि नेदरलैंड रॉटरडैम में वो जाके एंड होती है और अपने उसमें मिक्सअप होती है योर नॉर्दर्न सी. ठीक है. सो दैट इज़ कम्प्लीटली राइट. आई थिंक मेजर कन्फ्यूजन वॉज विद रिस्पेक्ट टू फिफ्थ फ्रांस में यू गाइज गॉट कन्फ्यूज्ड. why did you guys got confused? See, कौन सी countries है? We've got Switzerland, Austria, Liechtenstein, Germany, France and Netherlands. ठीक है. एक piece of advice, अगर अभी तक जैसे 2 map based questions हुए हैं, please guys जो atlas है, ठीक है, जो एटलिस है उसको प्रॉपरली रिवाइज किया करो. लाइक देर आर मैप्स ऑफ से यूरोपियन रीजन, देन देर इज मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देन देर इज मैप ऑफ अफ्रीका. तो इनके फिजिकल मैप look at them properly and memorize the areas. ठीक है. This is very very important. ठीक है. Ajay is saying that WW2 is, it has very strategic importance, right? Okay, चलो देखते हैं who all got it correct. Sujita, good. Saurav, good. Varsha, Ajay, Mayur, Parth. So we've got good amount of entry that is coming in. ठीक है. Vijay Lakshmi, Ruth, Sujita, Kumar. ठीक है. चलो, good guys. ठीक है. I hope that concept is clear. ठीक है. I see couple of other peoples are also joining. ठीक है. तो जिसको और ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना, menti.com पे जाओ, 51 43 49 पे जाओ. And again, before I'm starting with this question, please carefully read the question. Options को थोड़ा analyze करो and then answer it. ठीक है. because I know geography is an easy subject. That is why I made the options a bit tricky. ठीक है. So be careful while you're answering these questions. ठीक है. चलो, let's move on quickly to the next question, and it is talking about Noctilucent Clouds. ठीक है. And you have to tell me which statement is correct out of these 4. So the first is that these set of clouds are formed at the tropopause. So what is tropopause? That's the first surface of the atmospheric layer. ठीक है. मेजर जितने भी हमारे ट्रोपोस्फेयर में एटमॉस्फेरिक रीजन होते हैं, सो इट डिवाइड्स ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर एंड दैट इज द एरिया विच इज कॉल्ड ट्रोपोपोज. ठीक है. देन सेकेंड इज दीज आर ऑफन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द समर मंथ्स. ठीक है. सो वीव गॉट answers coming into play. Let's see. I hope you guys have attempted correct options. तो अभी मेरे सामने रिजल्ट आया है एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट 7 लोगों ने सही आंसर किया है. ठीक है. 11 लोगों ने बोथ दी ऑप्शंस चूज करे हैं विच इज़ रॉन्ग एंड some had selected A and D, which is again wrong. ठीक है. किसी को पता है why is the first statement not wrong if it's not formed at tropopause?
whoever answered, can you tell me in which surface of the atmosphere is it formed? ठीक है, जो भी है, somebody who knows can write it in the chat box. ठीक है, quickly. So ये जो okay, मयूर has answered menopause. Excellent. ठीक है, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर में नहीं बनता है. दिस इज समवेयर दैट कम्स इन द मीजोस्फेयर. ठीक है, विच इज जस्ट लोकेटेड अबव योर स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, एंड इट इज बिलो थर्मोस्फेयर. ठीक है, एंड बेसिकली ये टाइनी आइस क्रिस्टल्स, दीज क्लाउड्स आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल्स and they are in fact the highest clouds in your Earth's atmosphere. ठीक है, so that is why the first statement is wrong. Second statement is absolutely right because they are observed. Harji has also said mesosphere, so excellent Harji. I've got couple of people whose geography are strong here. ठीक है, they are second statement is completely right because they are observed in the summer regions and वो भी particularly they are observed from the polar regions. Because again they require very low temperature to form and that is why they are only visible when the sun is actually below the horizons. ठीक है, जैसे मैंने बोला they are formed of ice crystals, that is why low temperature is needed here. ठीक है, so we have got few people who've answered this correctly. ठीक है, तो I think there's a very intense competition today. ठीक है, many of you are going wrong, so again I want you to carefully pay attention कि सही आंसर करना है. So I see a lot of changes here. Mayur is back here, Bharadwaj is there, Hustler, Akash, Varsha, Ajay. Sujita has got a good lead today. Excellent Sujita. Then we've got Saurav with good lead. Mayur is back in the game. Nikki is there, Bharadwaj, the Hustler, Akash, Varsha, Ajay, Parth. ठीक है, तो मतलब कंपटीशन बहुत इंटेंस है. वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू गेट आंसर्स राइट एंड बी देयर ऑन द लीडर बोर्ड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, रीड द ऑप्शन प्रॉपरली एंड देन आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शंस विल बी ट्रिकी. आई हैव मेड देम पर्पसली ट्रिकी. ठीक है, कंसेप्ट आपने सारे सुने हुए होंगे. जैसे नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्चुअली ऑन एल्बीडो. ठीक है, आपने पढ़ा होगा बट ऑप्शंस माइट बी ट्रिकी, सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर आंसरिंग. चलो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is, you have to arrange in the decreasing order of albedo. So the one which has the highest albedo, you have to place it first, then second, then third, then fourth, then fifth. ठीक है, फिफ्थ है नहीं, फोर्थ तक ही है. तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा albedo किस में है. ठीक है, फर्स्ट, then second is whether it's snow cover or whether it's water, whether it's sand or grassland. इन सब में choices है guys. ठीक है, अच्छा, albedo again, if somebody who's forgotten, it's the reflection, how much of reflection, like if a sun rays fall on a surface, how much of it is observed and how much of it is reflected. ठीक है, so that is the concept here. So time is running out guys and okay, I think I made the paper a bit hard. If you feel that the paper is hard, let me know in the comment box. I can reduce the difficulty level a bit. ठीक है, Sujita is saying mesosphere, so I guess people got confused here. ठीक है, किसने I think major confusion is between option A and option D. ठीक है, who all have answered the option D. Can you give me an explanation here? मतलब for these guys who are not able to answer, क्या confusion रहा था? Brahma asked me saying yes, it's hard. See guys, albedo वाला जो concept है ना, एक विकीपीडिया पे जाओ, लाइक आप अपने गूगल पे टाइप करो albedo and go to विकीपीडिया पेज. ऑन द आई थिंक राइट हैंड साइड यू विल सी अ डायग्राम मेड. ठीक है, उसमें डिग्री दिया हुआ है. सबसे ऊपर जैसे स्नो कवर आ जाता है, ठीक है, फिर सैंड लिखा हुआ है, डेजर्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे ग्रासलैंड. दैट इज़ अ वेरी नाइस पिक्टोरियल. ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी पिक्चर है जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली रिमेंबर albedo, क्योंकि यू कैन नॉट रिमेंबर द नंबर्स. ठीक है, वो एक पिक्चर देख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो एंड यूल नेवर गो रॉन्ग हियर. ठीक है, वर्षा इज सेइंग दैट आई थॉट ग्रासलैंड वाज द लीस्ट. नो वर्षा, वाटर इज द लीस्ट हियर. उससे पहले ग्रासलैंड आता है. ठीक है,
एंड उसके ऊपर हमारा सैंड आता है एंड उसके ऊपर हमारा नंबर 1 पे स्नो कवर आता है. तो आई थिंक स्नो कवर तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तभी दैट ऑप्शन वॉज केप्ट सेम हियर. बट अगेन I think the difference that you guys got confused was water and grassland. Unnati saying ocean retain heats for long time more than land, so water will be 4. Yes, Unnati, good point here. Brahma Asmi saying cement is the least. Cement, you're saying that the albedo is the lowest for cement. But what about like हाँ, मतलब जब हम उस कंसेप्ट की बात करते हैं ना, इफ़ यू गाइज रिमेंबर व्हाट इज दैट कंसेप्ट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, द हीटिंग अप ऑफ अर्बन हॉट प्लेसेस, आई एम फॉरगेटिंग, देयर इज अ मेंस क्वेश्चन ऑन इट ऑल्सो. UPSC pattern, it's okay if it's tough. So CR is saying it's okay if it's tough. Can anybody write in the comment box wo ek question is there na on urban, matlab cement ki wajah se it all heats up, like the area is much more hotter than the suburbs wala. Ha, urban heat island. Yes, exactly, Varsha. Yes, so that is also an application of the idea of albedo. ठीक है, तो ये question जो है albedo वाला is relevant for your mains as well as for your prelims. ठीक है, lucky queen Harji, thank you so much for urban heat island. चलो guys, be careful. पहले ही बता रही हूँ, concepts are from UPSC pattern but they are a bit tough, confusing है थोड़े से ऑप्शन, गलतियाँ मत करो. Since we've been doing this session from 2-3 weeks, I think अब थोड़ा सा हमें hard करना is necessary. ठीक है, चलो let's see क्या चल रहा है. Who guys have answered it correctly? I am very much observant. अच्छा, Nikki, Unnati, yes, Unnati, obviously she was right, and I think one of the person from the other than top 10 were able to answer it correct. ठीक है, तो Nikki is back on second, Saurav is there, and Sujita I think has maintained a good lead. ठीक है, चलो let's quickly move on to the next question. देखते हैं क्या है question अगला. ठीक है, anybody who is joining new, all you gotta do is ऊपर कोड है उसमें टाइप करो और ज्वाइन इन करो. ठीक है, quickly let's move on to the next question. So अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मेडिटेरियन सी. आई थिंक दिस शुड बी ईजी, दिस शुड नॉट बी दैट हार्ड. अगेन मेडिटेरियन सी पे प्रीलिम्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, सुजीता इज सेइंग दैट शी इज कंफ्यूज बिटवीन सैंड एंड ग्रासलैंड. सी, ऑल काइंड ऑफ सैंड इज अबव ग्रासलैंड. यहाँ पे डेजर्ट, ड्राई सैंड, वेट सैंड. सुजीता, गो एंड लुक एट द डायग्राम. ठीक है, वो जो एक छोटा सा डायग्राम बनाया ना विकीपीडिया पे एल्बीडो रिलेटेड, दैट इज वेरी वेरी गुड. ठीक है, तो अगेन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज मेडिटेरियन सी. तो मेडिटेरियन सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, एवरीबडी मस्ट हैव सीन द प्रीवियस ईयर. तो हर 2-3 साल में मेडिटेरियन रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और स्पेशली मेडिटेरियन, कैस्पियन सी, ये वाला जो एरिया है. ठीक है, मैपिंग मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की गलत जा रही है गाइज. व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू गाइज? क्यों मैप्स लोगों के सही क्यों नहीं जा रहे हैं? मेडिटेरियन सी एक बार अपने मैप्स गूगल मैप में खोल के देखो. देखो, ईरान तो नहीं आता है उसके अराउंड. ठीक है, सो आई थिंक 4 तो नहीं होना चाहिए था. तो जिन्होंने भी ऑल ऑफ देम सेलेक्ट किया है, व्हाई डिड यू डू दैट? ईरान कहाँ से आ रहा है? ईरान इज समवेयर इधर मिडल ईस्ट में आ रहा है. मेडिटेरियन सी इज इन यूरोप. व्हाई यू गाइज कंफ्यूजिंग दिस कंसेप्ट? ठीक है, एंड देखो, साइप्रस, लेबनन हमारा इस साइड पे आता है, जो मिडल ईस्ट वाले साइड से लेबनन टच होता है. अल्जीरिया हमारा अफ्रीका साइड पे आता है. साइप्रस यूरोप. स्लोवेनिया इज ऑल्सो यूरोप. ठीक है, एक बार पूरी कंट्रीज प्लीज़ अपने ये एरिया को देखो, कौन कौन सी कंट्रीज़ है. बॉर्डरिंग कंट्री अगर हम उसके अराउंड जाए, उन्नति इज सेइंग इट शुड नॉट बी देयर. what does not surround. Oh, okay, sorry. अच्छा. It says does not and the option is saying okay, sorry. Yes, there's a mistake with respect to, I think जिन्होंने साउंड सराउंड करके सेलेक्ट किया है, दैट इज़ राइट. ठीक है, राइट. बट अगेन गाइज, आई थिंक ऑप्शन वाइज आपका मतलब थोड़ा बहुत गेस आप कर सकते थे, मतलब क्योंकि डज नॉट सराउंड में भी आई थिंक ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, क्योंकि
अल्जीरिया भी आपको पता होना चाहिए कि सराउंड करता है, लेबनन भी आपको पता होना चाहिए कि सराउंड करता है. तो ऑल ऑफ द अबव तो आई डोंट थिंक, डज नॉट में भी वो करेक्ट नहीं आएगा. ठीक है. एनीवेज, बट द आइडिया हियर इज कि मेडिटेरियन सी आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि कहाँ पे है, विच ऑल कंट्रीज एक्चुअली सराउंड दैट प्लेस. ठीक है. थोड़ा सा आई थिंक ये नॉट वाला नहीं आना चाहिए था, नॉट गलती से आ गया क्वेश्चन में, बट अगेन ऑप्शंस के थ्रू आई थिंक यू कुड हैव गेज्ड हियर कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि मेजरली सिर्फ एक ईरान ही है जो इसको सराउंड नहीं करता है. ठीक है. बाकी सारी कंट्रीज इस ऑप्शंस में सराउंड करती है. ठीक है. तो there'll be a twist here with respect to the leaderboard here. Sujita again went right here, so Sujita is on lead this time. I think Sujita has done the concepts very well doing. Sujita, काफ़ी सारे आंसर्स you have answered very well. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्विकली. I've got 24 players, I think earlier 27 थे. So whoever is who is not able to log in, आप फिर से log in करिए, अपना कोड डालिए and you can log in. ठीक है. कोड क्या है? 51, 43, 40 and 90. ठीक है. चलो क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, दिस इज लाइक अ मैचिंग काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है. एंड यू हैव टू सेलेक्ट विच ऑल इज करेक्ट. एंड अगेन ये पेयर वाला है. दिस वॉज अ न्यू थिंग दैट the UPSC had started. ठीक है. कि you have to tell me whether Poland or Adamawa Plateau is on the same side, whether Hudson and Canada, Ionian Sea and Greece, whether these are matching or not, Iberian Peninsula and Spain. Again, world history related, and you have to pick up the options. ठीक है. कि how many of them are correctly matched or not. ठीक है. So everybody has voted, so I think people are confident about this. Yes, so I'm very happy. At least I have majority with respect to the answer here. ठीक है. So people got confused with respect to so for 2 people were sure. ठीक है. Which one was the wrong one? So can anybody tell me in the chat box which one was the wrong one and where is it located actually? ठीक है. Can anybody identify and let me know in the chat box? Yes, Mayur is saying Adamawa Plateau, right? Where is it located, Mayur? Yes, Varsha, yes, the first one is right, but you have to tell me where is it located also, because then I would be like sure कि आपको एकदम 100% geography mapping का तो concept आपको पता है. ठीक है. मयूर इज सेइंग इट्स इन अफ्रीका. येस, इट इज़ इन अफ्रीका मयूर. आप अगर मैप खोल के देखोगे, फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, यू विल सी ऑन द वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीकन साइड, लाइक ऑन द एक्सट्रीम वेस्टर्न, जहाँ पे हमारा सेंट्रल जो कैमरून की प्रोविंसेस शुरू होती है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जाती है ना, नाइजीरिया वाला. ठीक है. ये वाला जो एरिया है, नाइजीरिया, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दिस साइड ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इस साइड पे ये अडवाना प्लेटो आता है. ठीक है. तो बाकी सारे तो आर करेक्टली मैच्ड, बट दिस वन इज नॉट रॉन्ग. Sorry, this one is wrong. Poland में नहीं है ये. This is in Africa. And again, why did I include Africa here? Because आप देखना काफ़ी सारे concept, जैसे Orange River, 2-3 basins वगैरह, a lot of things have been asked from Africa. तो जो Africa का map है ना, with respect to the physical African map, that is very very important. तो वो atlas में देखना और उसको properly revise करना. ठीक है. That is very important. ठीक है. चलो let's see लीडर बोर्ड पे क्या चल रहा है स्टेटस. What I can see is a lot of you guys. अच्छा, न्यू एंट्री भी आ गए यहाँ पे. वर्षा इज इन टॉप 10. ठीक है. Varsha is in top 10. I can see Sujita on top. Nikki is there. Saurabh is there. Mayur came again on 4th. ठीक है. Varsha आ गए. Ajay is there. The Hustler, Ambriel, SSS and Bharadwaj. So again, Bharadwaj, welcome back. ठीक है. Varsha is saying Fagubio. I am not understanding in what context you're writing that, Varsha. ठीक है. तो एक्सेलेंट गाइज. आई थिंक
except for one question which went wrong. I think बाकी सारा तो ठीक ही गया अभी तक, and अभी तक I think a lot of you guys have answered well. I can see lead being maintained by Sujita, तो I think आपने geography वाला concept तो properly revise किया है. थोड़े से options मैंने tricky रखे हैं, and I think I'll continue with that pattern. ठीक है? Okay, UPSC question. ठीक है, right, Varsha. ठीक है, so I'll continue with this pattern of keeping a bit hard questions because I think that will help you out more. क्योंकि easy question करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस या थोड़े से ट्रिकी ऑप्शंस देखने में, करने में, आई थिंक दैट इज़ मच मोर एंगेजिंग. एटलीस्ट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस का आइडिया क्या है कि चाहे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका एक क्वेश्चन भी मेरे सेशन से आ जाए, आई थिंक दैट इज़ गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. ठीक है, सो द होल आइडिया ऑफ निकालो प्रीलिम्स वुड बी सक्सेसफुल अगर एक दो क्वेश्चन भी यूपीएससी से मैचिंग आ जाए. ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है. Permafrost. ठीक है, and you have to pick up the incorrect statement. And again, see, permafrost ना हमारा मेंस के अकॉर्डिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि permafrost रिलेटेड क्रायोस्फेयर, व्हाट इज क्रायोस्फेयर करके भी क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, उसकी थॉइंग पे भी, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. And make sure you go through it, you properly revise it. ठीक है, because there's a high chance that if it's come in mains, it might come in your prelims also. ठीक है, so again you have to pick up the incorrect statement here. पहला statement is talking about that it is found both on land and ocean. Great. I think this was an easy question, तो यहाँ पे issue नहीं होना चाहिए था. So I see the majority being on the right side, which is the C option, which is completely incorrect. ठीक है, whoever answered the first option, guys, land, ocean floors सब पे होता है permafrost. ठीक है, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू जस्ट द लैंड. ठीक है, आपका ओशन, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर लॉट ऑफ टाइम जब भी हम आर्टिक एंटार्टिक में बात करते हैं तो वी डू रिलेट द कंसेप्ट ऑफ परमाफ्रॉस्ट देयर. ठीक है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ऑप्शन 1. सेकेंड इज ऑल्सो राइट, इट इज़ एटलीस्ट 2 years. ठीक है, थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट फॉल. ठीक है, मतलब आई थिंक ये ईजी कंसेप्ट था टू पिक अप. Like it has to be sea level rise because we always keep on talking. Yes, excellent Varsha, it is sea level rise because we keep on talking about how climate change is affecting the permafrost and it's, you know, kind of melting, and that is why we are having rise levels increasing, and that is what is endangering the islands and the coastal regions. Okay, so the whole idea was linked to that idea. तो let's see, 16 है तो मतलब काफ़ी कुछ चेंज तो होगा ही लीडर बोर्ड पे. I think all of you answered well. Mayur and Nikki, I think you're going to go down now. Yes. So I see Saurav coming back to the second position. Nikki is on third. Varsha is on fourth. Ajay is there. Santosh, again, welcome back. Mayur, Bharadwaj, SSS, Ruth. ठीक है, सो अ वेरी कॉम्पिटिटिव थिंग हैपनिंग हियर. सुजीता ने अपनी अच्छी लीड बना ली है. सौरभ, आपको ना बहुत ही जल्दी आंसर्स करने पड़ेंगे टू ब्रेक द लीड ऑफ सुजीता. ठीक है, एक्सीलेंट. चलो क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है वर्ल्ड की, एंड आई एम सीइंग a lot of you have done the questions well. few tricky questions, few details. Be very careful, उसको properly answer करो. Ajay is saying IPCC report was released. Yes Ajay, completely right. ठीक है, चलो let's move on to the next question. क्या है हमारा next question? Quickly let's see. Savanna landscape. ठीक है, which of them you will not see? ठीक है, तो सवाना लैंडस्केप के बारे में वी टॉकिंग अबाउट. ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा ना प्रीलिम्स में. जैसे यूजुअली मेडिटेरियन, मैंने देखा है मेडिटेरियन वाला जो क्लाइमेट या लैंडस्केप है ना, उसको यूजुअली डिस्क्राइब करते हैं. तो एक मेडिटेरियन, ट्रॉपिकल, सवाना. सो इन सब से रिलेटेड यू कैन सी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं. सो दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक वेर यू आइडेंटिफाई द forest related details or the climate related details of certain area. ठीक है, again mixed result here. I think people got confused here थोड़ा सा ना. Okay,
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सवाना लैंडस्केप की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको यू गाइस मस्ट नो दैट इट्स अ ग्रासलैंड, ठीक है। तो ग्रासलैंड है एंड यू मस्ट हैव सीन कि काफ़ी मतलब जब भी आप सवाना अगर आप गूगल करो, एंड वन मोर थिंग गाइज, जब भी आप ये लैंडस्केप पढ़ रहे हो ना, थोड़ा गूगल करके इमेजेस देखो, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू रिटेन द होल आइडिया, ठीक है। सुजीता इज टॉकिंग अबाउट एलिफेंट ग्रास, एक्सीलेंट सुजीता। सी एलिफेंट ग्रास इज नॉट अ सॉफ्ट एंड शॉर्ट ग्रास। सवाना में द ग्रासेज आर वेरी वेरी कोर्स एंड दे आर वेरी वेरी टॉल, ठीक है। इफ़ यू अगेन मतलब आप अभी के अभी अगर आप गूगल करके भी देखो तो सवाना में आपको दिखेगा, मतलब ऐसे लंबे लंबे ग्राउंड्स है, दे आर वेरी कोर्स ग्रास दैट इज आउट देयर, ठीक है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, अम्ब्रेला शेप ट्री, ये भी आपको प्रॉपर्ली दिखती है, एक ट्री दिख जाएगा, like they are not bundles of tree that is there in savanna. You'll see one tree and it will have that umbrella kind of a shape, ठीक है। obviously if it's like a semi arid condition तो trees are going to shed their leaves, ठीक है। ये ट्रॉपिकल सवाना लैंडस्केप ट्रॉपिकल रीजन तो होता नहीं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, सो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इज गोना गो रॉन्ग। देखो थर्ड एंड फोर्थ समवॉट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑप्शन एक दूसरे को, ठीक है। सो यू गाइज शुड नॉट हैव गॉट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो आई कैन सी 7 people have answered it, ठीक है। आई सपोज दिस वॉज नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, बट आई गेस या तो यू गाइज फॉरगॉट टू सी, नॉट विल नॉट सी, or you got confused between one or few options, ठीक है। Let me know if you have any particular doubt in this question because I thought many of you will answer this correctly, ठीक है। लीडर बोर्ड पे देखते हैं, आई थिंक सुजीता की तो लीड चलने ही वाली है, सुजीता, वर्षा एंड श्री। तो मेरे ख्याल से जो लीडर बोर्ड के बाहर थे उन 7 लोगों ने ये आंसर सही किया है, ठीक है। एक्सीलेंट गाइज, सो आई सी न्यू एंट्री हियर, श्री कमिंग टू द टॉप 10. Varsha is on second now, Saurav third, Ajay is there, Santosh, Mayur, Bharadwaj and SSS, ठीक है। excellent. तो आई होप यू गाइज आर फाइंडिंग द क्विज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है थोड़ा सा टफ है बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन ऑफ द डे क्विकली, ठीक है। एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन, आप कर लो अभी ज्वाइन, बट अभी टॉप 10 में तो आना पॉसिबल नहीं होगा ऑनेस्टली, because we already have 5,000 some points in the top 10 and in order to do fast, do wrong, CR, no CR, see you have to answer it correctly, don't go wrong, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200 नंबर का डिफरेंस होगा, बट वो 700-800 नंबर थोड़ी ना लूज आउट कर दें, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आप सोचो और अपना कंसेप्ट याद करो, रिवाइज करो, ठीक है, एंड यू विल रिमेंबर, ठीक है। सो गो हेड गाइज, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को याद करो। आई थिंक नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर तो आप इसको प्रॉपरली कर सकते हो। इट्स बेसिकली अबाउट योर विंड सिस्टम, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर आंसरिंग दिस आंसर, ठीक है। आई कैन सी दैट लॉट ऑफ आंसर्स आर आंसर्ड हियर, तो मतलब पीपल वर क्विक टू आंसर हियर, ठीक है। अगेन हियर आई थिंक लॉजिक कुड हैव बीन अप्लाइड अ बिट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लग सकता था कि देखो हर्मटन विंड्स अगर यहाँ पे लिखा है एंड इट सेज इट्स डॉक्टर विंड, ठीक है। तो इफ़ यू रिमेंबर द वेरी आइडिया ऑफ डॉक्टर विंड्स इज क्या करते थे, जैसे अगर थोड़ा सा भी आपको कंसेप्ट याद है, यस एक्सीलेंट वर्षा, ये क्या करते हैं जो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। उससे क्या होता है कि अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, अ लॉट ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इट रिड्यूसेस, ठीक है। तो देखो जहाँ पे भी ज़्यादा ठंड या कूलिंग इफेक्ट होगा या मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग, वायरस ग्रोइंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ कोल्ड, फ्लू, एवरीथिंग वुड बी देयर, ठीक है। तो उस कंसेप्ट से थोड़ा लिंक करो। हर्मटन को इसलिए डॉक्टर विंड्स कहते हैं क्योंकि इट ब्रिंग्स डाउन द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सी, ठीक है।
it reduces the moisture content, and उसकी वजह से it kind of provides a less hospitable environment for bacteria and other viruses to grow on. ठीक है, तो that is the idea here. तो इसीलिए first statement is not right here, like Varsha pointed out perfectly. Second statement is एग्जैक्टली राइट. देखो हमारी दो टाइप ऑफ विंड्स है, एक ऑन शोर है एंड ऑफ शोर है. तो ऑन शोर क्या हो रहा है, सी से जाएगी विंड लैंड के ऊपर. सो इफ समथिंग इज गोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, ऑब्वियसली इट विल हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन टू द लैंड, इट विल हैव अ कूलिंग इफेक्ट. If the wind are going from the land to the sea, which means offshore winds, it will not have moisture, it will be deprived of moisture, and it will be kind of creating your semi-arid or arid conditions. Okay, so that was the concept here. No idea about this topic. So Sujita, I think you okay, nice. So you were making इंटेलिजेंट गेसिंग हियर. हाँ, आई थिंक इस क्वेश्चन में गाइज इंटेलिजेंट गेसिंग आपकी ईजिली हो सकती थी. ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर वाई अ लॉट ऑफ यू आंसर्ड बोथ हियर. मे बी जल्दी के चक्कर में यू आंसर्ड दिस, बट बी वेरी केयरफुल हियर. हर्मटन इज दिस डॉक्टर विंड्स इज कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट. ठीक है, तो देखते हैं अब लीडर बोर्ड पे क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द लीडर बोर्ड. वर्षा, श्री, एसएस, आई थिंक दे गाइज excellent. Shri, I think started, I think last two questions mein Shri is here and you've picked up a good lead. I think that is what proves if you're answering consistently right, आप top 10 में easily आ सकते हो. In fact Shri is in top 3. अभी 2-3 question पहले ही started coming up. ठीक है, so Saurav is there, Nikki is there, SS again excellent that you got into the lead here. Ajay, Santosh, Mayur, Bharadwaj. ठीक है, सो गाइज आई थिंक अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आ रहा है. सो आई थिंक सुजीता कैन सिट बैक ईजिली, बट आई थिंक यू शुड आंसर इट सुजीता, बिकॉज आई डोंट थिंक somebody is breaking your lead. But I think there's an intense competition between Varsha versus Shri, Saurav versus Nikki, SSS versus Ajay, and Santosh, Mayur and Bharadwaj to maintain in the top 10, because obviously we can have some few people coming in again. ठीक है, तो चलो let's move on quickly to the last question of the day. ठीक है, and again this will be on physical geography of the world. ठीक है, be careful, read the question properly and उसके बाद उसको आंसर करो. ठीक है, quickly let's move on. क्या है हमारा question, what is it about? Okay, plate system, and again do you pay attention to what are the various examples of these plate system. ठीक है, एक तो बहुत easy होगा, I think transform वाला should be very easy for you guys to tell, because ये काफ़ी बार we use as an example. Divergent and convergent, I think that might be confusing for some of you guys, but again the devil lies in the details. ठीक है, so that is the idea here. So I see that people have voted before, and okay, so we have majority vote which is going wrong here. So which people said only 2 pair are correct. Which all which pair do you think is wrong here, guys? Because I think, see, the answer is right here. All of the pairs are correctly matched here. So again the idea here is divergent, convergent and transform plate. ठीक है, तो divergent क्या है, जब भी वर्षा is saying all are correct. Yes Varsha, excellent. देखो divergent plate क्या है, जब भी the plates move away from each other. ठीक है, तो major इसके examples क्या रहते हैं, हमारा East African rift है. ठीक है, then we've got Baikal rift, we've got Red Sea rift. तो जहाँ पे भी rifts वगैरह आपको दिखते हैं ना, that is usually divergent. ठीक है, तो I think ये first option तो should have been given away by that only. ठीक है, चाहे आपको पता हो या ना हो East African है या नहीं, usually rift valleys हमारी divergent में ही आएगी.
ठीक है. Then there is convergent. Convergent, what is happening is it gonna collapse together. ठीक है, साथ में it would come. तो usually क्या होता है उन areas में, see when two plates come together, या तो हमारे mountains form होते हैं यहाँ पे वहाँ पे, या तो volcanic activities होती है, earthquakes होती है. तो जैसे वर्षा ने लिखा है कि this Aleutian is actually on जो हमारा ring of fire वाला area रहता है ना, ठीक है. सो दैट इज द आइडिया है. तो जापान, एलूशियन आइलैंड्स, इनफैक्ट इवन हिमालयाज वाला रीजन, ठीक है. तो अगेन द आइडिया इज कि कन्वर्जेंट मीन्स वोल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. एंड ट्रांसफॉर्म वाला आई थिंक मैंने तो पहले ही बता दिया था कि इट इज़ एन ईजी, बिकॉज दैट इज़ द ओनली एग्जाम्पल जो अगर हम अपनी एनसीईआरटी वगैरह में भी देखें ना, तो वही एग्जाम्पल होता है यूजली सेन एंड्रियास, ठीक है. एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल रहता है, और भी कई अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यूजुअली ट्रांसफॉर्म में भी हम वही एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है. सो आई थिंक दिस वाज प्रीटी इजी एंड क्लियर. तो आई एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली, क्योंकि मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लगा था. बट अगेन गाइज, लर्निंग हियर इज कि ज्योग्राफी के जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, नंबर 1 मैपिंग बहुत प्रॉपरली देखो, नंबर 2 पे अटेंशन टू डिटेल्स, किस चीज़ का क्या एग्जाम्पल है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सुजीत सेड दैट रिफ्ट वॉज अ क्लू हियर. एक्सीलेंट सुजीत, आई थिंक दैट इज द पॉइंट दैट आई सेड हियर, ठीक है. तो मैप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. थोड़ा डिटेल में आइडिया को देखा करो, ठीक है. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन थ्रू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑल्सो. जैसे वो विंड वाला जो सिस्टम था वो कंसेप्ट के थ्रू आप कर सकते थे, ठीक है. सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन अप्लाई कंसेप्ट ऑल्सो, बट बी वेरी केयरफुल कि एटलीस्ट फैक्चुअल एंड मैपिंग इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है. चलो देखते हैं व्हाट इज द लीडर बोर्ड टुडे. आई थिंक सुजीता ऑब्वियसली इज विनिंग. But yes, she could not answer the last question correctly. So I see Varsha is second. Excellent, Sujita. Congratulations first. A good lead that you got. Varsha, again, excellent. I think you did. You were there active in the chat box also. So आपका concept is very very clear. I think. Shri, excellent. Again, you made an entry a bit late into the top 10. So that's a very good feat here. Nikki, congratulations. Saurav, congratulations. I'm not sure who's here. I cannot see the name because Sujita is here. उसके बाद Neha is there. Ajay, Santosh, Hustler. Excellent guys. Very very good. I am not sure who's below Saurav. I cannot see the name right now. ठीक है, तो good session you guys. ठीक है. We've got SK Jobber. Hello, hi, Varsha. Thank you so much for playing very well. ठीक है, guys. So today we did world history. कल हम geography उठाएंगे इंडिया की, ठीक है. And again we'll be looking at a lot of detail related question, mapping related question, ठीक है. तो थोड़ा सा अपना एटलिस्ट पढ़ के रिवाइज करके आना प्रॉपरली, बिकॉज आई वॉन्ट अ वेरी वेरी गुड कॉम्पिटिशन हियर. मतलब आई वॉन्ट कि यहाँ पे सबके 5000 में ही स्कोर होने चाहिए कल भी, ठीक है. सो एक्सेलेंट गाइज, अ ग्रेट सेशन टुडे. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. See you tomorrow at 7 o'clock sharp with another round of your geography revisited. Thank you guys. See you tomorrow.